हेलो एवरीबॉडी। मेजरमेंट एंड ऑटोमेशन का नया टॉपिक आज हम लोग देखेंगे। टेम्परेचर मेजरमेंट के अंदर पहले हमने देखा था नॉन इलेक्ट्रिकल मेथड, आज देखेंगे इलेक्ट्रिकल मेथड्स। इसे बेसिकली आरटीडी एक टर्म है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स, ये यूज होगा। इसको हम लोग रेजिस्टेंस थर्मामीटर भी नाम से बोलते हैं। होता क्या है इसमें कि कोई भी मेटल का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाता है। बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे डिटेक्टर काम करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या और टर्म्स हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग यूज करते हैं प्लैटिनम। मोस्टली प्लैटिनम एलिमेंट को यूज किया जाता है। ये एक तरह का आरटीडी एलिमेंट है। कई सारे फैक्टर हैं जिस कारण से हम प्लैटिनम यूज करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि प्लैटिनम नाम जो पड़ा है ये एक्चुअली स्पेनिश नेम है जो प्लैटिनो से बना है, जिसका मतलब होता है लिटिल सिल्वर। ये एक सिल्वरी कलर का मेटल है। ये हाईली डेंस होता है, डक्टाइल इन नेचर एंड हाईली अनरिएक्टिव। metal and also it is resistant to corrosion at high temperature. There are several reasons due to which we are taking the platinum as a detector, because of its linear variation of temperature, its temperature coefficient is very large. Temperature coefficient is large, जिस कारण से छोटा सा भी रेजिस्टेंस में चेंजिंग का हम लोग पता कर सकते हैं। इट इज वेरी स्टेबल, सो ड्यू टू दिस रीजंस वी आर टेकिंग द प्लैटिनम एज द आरटीडी एलिमेंट। इससे पहले कुछ टर्म्स हम लोग जान जाते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस thermometers. Electrical resistance thermometer. Before we start, we know that there is temperature coefficient of every element. Denoted by alpha, and we know that alpha is change in resistance around of T. So this is a resistance change factor per degree of temperature, means per degree of change in temperature, per degree of change in temperature. All materials change their resistance according to temperature change. जैसे कि प्योर मेटल का क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मीन्स आर विल इंक्रीज अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो। सेमीकंडक्टर्स लाइक कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनके साथ क्या है, दे आर नेगेटिव
temperature coefficient means when we increase the temperature, their resistance value decreases. So due to this phenomenon, we use all this phenomenon in electrical resistance thermometers. First of all, we have metallic resistance. Metallic resistance thermometer. It is temperature sensitive element is installed in the form of a coil, or we can say fine wire. Let us see the construction of metallic resistance thermometer. This is the construction of metallic resistance thermometer. It has got a hollow sheath, a metal sheath, a cover. इसके अंदर में एक प्रोटेक्टिव सीमेंट का पेस्ट है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 टर्मिनल हैं जो कॉपर लीड्स के बने हुए हैं। इसके अंदर एक रेजिस्टेंस एलिमेंट कॉयल है, एक कॉयल का इस टर्मिनल से कनेक्टर है और दूसरा इसके एंड से। ये एक हॉलो सेरेमिक फॉर्मर है, वेरी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर देखते हैं कि इसमें जो वायर है, वायर ऑफ metal that is mainly platinum is wound on the grooved hollow insulating ceramic former. The ends of the coil are welded to copper terminal leads. This metal sheath is for giving support, giving rigidity and support. Metals that we can use here: platinum, nickel, tungsten, but mostly the platinum is used because of its several reasons. Pure platinum are well defined as stable over a wide range of temperature. This is the most important characteristic of platinum. Next we have semiconductors. Resistance sensors. सेमीकंडक्टर हम जानते हैं
semiconductor, it is also known as थर्मिस्टर या फिर इसको थर्मल रेसिस्टर भी बोलते हैं। दिस इज थर्मली सेंसिटिव। थर्मली सेंसिटिव it has ceramic like semiconducting material. It is of many shapes. For example, we have a small bead. This may be glass coated bead. These are the wires. It may be rod shape. Also comes in chip shape. So these many shapes are there for thermistors. Thermistors respond negatively to temperature, and their coefficient of resistance is of order approx 10 times higher than platinum and copper. So it has got advantages. Let us see the advantage of thermistor. Since it has got large temperature coefficient, so they are extremely sensitive, devices. So it gives very good accuracy. Second one, it can withstand electrical and mechanical stresses. Third, good operating range. -100 to 300 degrees Celsius. Low cost. Certain disadvantages are there, जैसे कि
its non-linear behavior, non-linear resistance, temperature characteristic. Second one is self-heating problem. It has got a self-heating effects problem due to which there is certain temperature variation. Next we have the thermoelectric sensors. Thermoelectric sensors. थर्मोइलेक्ट्रिक का दूसरा नाम हम जानते हैं इसको थर्मोकपल। इसका जो प्रिंसिपल है पहले भी हम लोग पढ़े हैं। थर्मोकपल मीन्स दो इसमें वायर होंगे, एक हॉट जंक्शन, कोल्ड जंक्शन. So this thermocouple is a temperature transducer that develops an EMF which is a function of the temperature between hot junction and cold junction. देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में वेरी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन. इसमें it has two wire of different metals twisted and welded together. And welded together with each other. Welded together with each wire covered with insulation. वायर के ऊपर इंसुलेशन दिया रहता है. इंसुलेशन दो तरह के हो सकते हैं. मे बी मिनरल इंसुलेशन, मिनरल इंसुलेशन हो सकता है उसके ऊपर, या फिर सेरेमिक इंसुलेशन. इट डिपेंड अपॉन द ड्यूटी एंड वर्क एरिया. कहाँ पे क्या रखना है वहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं, मिनरल वाला या फिर सेरेमिक वाला. बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है? बेसिक प्रिंसिपल इसको हम डायग्राम से देखते हैं. Suppose this is T1 and junction 1, this is T2 and junction 2. ये दो वायर हैं A and B. तो इन दोनों वायर को अगर अलग अलग टेम्परेचर में रखा जाए तो हम पाते हैं कि एक EMF जनरेट होता है इनके पॉइंट्स के बीच में. अगर इसको मेजरमेंट लेना चाहें वोल्ट मीटर या एमीटर से तो हमें एक EMF यहाँ पर मिलेगा अगर ये दो मेटल अलग अलग टेम्परेचर पे रखे हुए हैं. तो
So this is very simple in construction. एक्चुअल में ये प्रिंसिपल सबसे पहले ये जो दिया गया था हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट्स ऑफ मेटल, जो थॉमसन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं हम लोग. हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट्स आर प्रोपोर्शनल to the current and are negligible in thermocouple circuit. In addition, the junction EMF is slightly altered if a temperature gradient exists along both the materials. इसको दूसरे नाम से जानते हैं. दिस इज थॉमसन इफेक्ट. ये उनके द्वारा ये पाया गया था. Now we will see the application of thermocouple. Application पहला है the actual application of thermocouple require consideration of thermoelectricity laws of. इसमें देखते हैं law of intermediate temperature और दूसरा है law of intermediate metals. पहला लॉ जो है लॉ ऑफ इंटरमीडिएट टेम्परेचर.